Good evening and welcome. Welcome to another episode of the Stock Market Ki Baat NJ ke Saath. I'm sure you guys would have had a wonderful week. You would have made good profits. And of course, market had been always in very volatile, jittery, and very much unpredictable, right? 3 days down, 3 days up, and it looks like chor sipahi ka khel raha hai, Nifty, right? So before we get into the market analysis or your stock analysis, let's look at what were the large events which happened in the last week and what's the outcome of that. So फेड का मीटिंग शेड्यूल्ड है, फेडरल बैंक का, आरबीआई का मीटिंग जो है वो हो गया है और एज पर देयर मॉनेटरी पॉलिसी देयर इज नो चेंज, राइट? सो दे हैड accommodative stance. They have taken accommodative stance. What does that mean? That means whatever the incentives or the benefits they were passing on due to COVID, they will continue to do that. Interest rate में कोई hike नहीं किया है, न reverse repo rate में कोई hike किया है. It was expected, in fact, that they might be increasing the inverse repo rate by 0.2 or 0.25 basic points, but ऐसा हुआ नहीं. So that was a good point for market to celebrate, and that's what it did on Thursday. But then Friday we saw another downside of the market. Market gap down start hui, and it went down close to 250 points. And वहां से of course थोड़ा buying start hui वहां पे. And another amazing thing happened, although not so significant. FIs were the first time buyer, although they bought with only 100 crore plus. Well, that's not a big amount, right? Because when they sell in 1000, at least 1200, 1500 crore. So uske samne mein ye buying kuch thi nahi. Friday, DIs were the net seller and FIs were the buyer. So that was another aspect of looking at it, because now agar price ko substantially ऊपर आना है तो there has to be funds pumped into the market, right? See, retail trader के पास में या retail investor के पास में limited funds है, and if large funds are there, they are with FIs and DIs. Now, among DIs, they are getting a regular SIP. I mean, of course, they are investing in mutual funds, and roughly around 10,000 crore की उनकी monthly SIP होती है. So that's what they pump into the market. But that is again money of the people, right? People are investing in mutual fund, and mutual funds in turn are investing in stock market. So that's what is happening. But there are IPOs lined up, right? LIC के IPO को approval मिल रहा है, and there had been a couple of other IPOs, Adani Wilmar, which has given a very good result. So the events are lined up, which are keeping the market very lively, very volatile, and very unpredictable. So you need to keep a tab on it. One more thing is happening around us. Despite we had a wonderful budget, we had all good news. And if I talk about the domestic cues, we are one by one getting wonderful domestic cues. But international cues are not good. International cues are, in fact, if you look at, they are negative. There are times when the US IT companies or US tech companies are not giving good results. Their quarterly results are bad. So Nasdaq down hota hai. Nasdaq agar 400 point down hota hai, to Nifty bhi seedhe 100 point down ho jata, right? So that's one negative news. Another negative news is the war-like situation between Russia and Ukraine, right? So that's another aspect of it. And then the NATO is getting into it. There was an agreement between when the USSR was disintegrated, then that was a time that Ukraine will not join NATO, and I think it's joining a NATO or some other kind of conversation is happening. So Russia is putting a lot of pressure, and Russia has a lot of nuclear warheads. So that is creating one negative aspect and rather fear. Although at this point of time, neither parties or the world cannot afford to be having a world war or any kind of nuclear war. But then negativity aati hai market mein, and then European markets slide by 1% or so.
पोस्ट लंच हमारे मार्केट में भी वो स्लाइड का इम्पैक्ट आता ही आता है. सो दैट्स वन एस्पेक्ट ऑफ थिंग व्हिच इज नॉट गोइंग इन अ गुड टेस्ट विद द यूएस स्टॉक मार्केट. So उसका impact है. Apart from that, oil prices are consistently going up. That is again not good for the Indian economy. Although Indian economy is supposed to be growing wonderfully beyond 8% or so. So ये एक point है. And of course, many people are waiting for LIC IPO to subscribe. Although एक जो डोमेस्टिक या एक जो रिटेल ट्रेडर होता है उसको सब्सक्रिप्शन के लिए एट द मोस्ट 14-15,000 रुपीज का ही इन्वेस्टमेंट लगता है, बट cumulatively it could be a big amount and that may suck the money from, or that may give a for time being or for temporary liquidity reduce हो सकती है मार्केट में या stagnant हो सकती है. Both are not good factors for the market. So that's what is happening. Otherwise, on our domestic front, our budget was good. Our Q3 results of the Indian companies are excellent. So वो सब positive news है. So that news yet needs to be reflected in our market. Partly things have discounted. Partly people are waiting, for different markets to give positive cues. मतलब international cues positive आने चाहिए. That is what is happening in the market. Now let's look at what is our chart saying, right? Because chart देखना बहुत जरूरी है. So if you look at last few day chart, this was a low. It made a higher high. Then जो next low था, it was higher than this low. Of course, the next high इससे high नहीं बन पाया. So this uptrend got disturbed here, right? फिर उसके बाद में from this low the market went up and the next low was higher than previous low. So you can say that the trend reversal एक यहाँ पे हमको दिखाई दिया. But Thursday तक तो टेम्पो अच्छा बना हुआ था, but Friday the market showed a downside. But if you look at this market on, let's say, 2 hourly basis, then you would possibly see a little different picture that would say the market is willing to make higher highs, right? So खाली ये high टूटना important है, which is around 17,800 के आसपास का. So once that is broken, then you would see the market would try to map 18,340, 350. And once that is covered, then next target we have is a 18,600 plus ka target, right? So cues are good. It's only uncertainties of international market that's what is driving or dragging our market down, right? If you look at the bank nifty, now आज की डेट में एक नया fraud नजर आया है 22,000 crore का. So that is ABG shipyard का है, right? So that might have some impact on Monday among the banks. The ICICI has got almost 7,500 crore का exposure है उसको. Similarly, State Bank of India, Axis Bank, almost 20 plus banks are exposed to this, you can say fraud, right? So that will have, of course, a negative impact on the market. That has been reported today, and CBI has already, taken a FIR, wrote a FIR against that group and its directors. Right? So ये भी एक negative aspect हमारे market के लिए भी आ रहा है. Overall अगर हम देखें, pluses, minuses market में चल रहे हैं, yet बैंक निफ्टी के पास में अपसाइड अभी भी अच्छी खासी है प्रीवियस टॉप अटेन करने के लिए. सिमिलरली निफ्टी में भी अराउंड 6 to 7% की अपसाइड. जब तक कि ये सेम डिस्ट्रीब्यूशन जोन में अगेन आता नहीं है, तब तक इतना अपसाइड हमको दिखाई देता है. मेरे ख्याल से अच्छे रिजल्ट हैं कंपनीज के, वैल्यूएशन अच्छे हैं. सो द मार्केट शुड बी एबल टू राइज अपसाइड एटलीस्ट अंटिल दिस मंथ एंड. नाउ एक मार्च में जैसे हमने देखा था कि दिसंबर में डीआईज ने प्रॉफिट बुकिंग की थी बिकॉज दे वर क्लोजिंग देयर ईयर एंड. सिमिलरली in the month of March we would see DIs would start selling because they also need to close books of account. They need to book long term gain, short term gain, जो भी उनके P&L और बैलेंस शीट के लिए जरूरी है वो definitely DIs would be doing. उसका एक negative impact market में जाएगा. But by the time अगर FIs start buying those stocks, definitely at least market would be
इन अ स्टैग्नेंट मोड और एक कंसोलिडेशन के मोड में चली जाएगी. सो आने वाले वक्त में आपको ये देखना है. अपार्ट फ्रॉम दैट यू ऑल्सो नीड टू टेक केयर ऑफ योर फाइनेंशियल प्लानिंग, राइट. आपको सेक्शन 80D के अंडर अगर 1,50,000 की रिबेट चाहिए है on your income tax, then definitely you need to plan your investment in mutual funds like ELSS and all. And I'm sure if you are filing your returns and you are showing long-term and short-term capital gain, apart from your business gains, you also need to close your books of account in the month of March and ensure that आपके जो long-term gain है, क्योंकि 1 लाख रुपए तक के long-term gains are exempted from the income tax. तो एटलीस्ट 1 लाख का तो इनकम टैक्स डेफिनेटली आपको बुक कर लेना चाहिए, राइट. एंड ईयर ऑन ईयर ये तो एक होना चाहिए. ऑफ कोर्स इफ यू आर हैविंग बिगर लॉन्ग टर्म गेन्स, यू कैन आल्सो do that part of it depending upon how you want to create your balance sheet. That's what is the advice at this point of time. So market seem to be promising at this point of time, although they are volatile. So इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है बिकॉज वोलेटिलिटी है, मूव्स बड़े आ रहे हैं. तो जो दोज ऑफ द पीपल हु नो हाउ टू ट्रेड इंट्राडे, दे कैन मेक गुड मनी. एंड नोवाइसेस who are not trained in intraday trades of FNO or stocks should stay away from the kind of market, right. देखो यहाँ पे बुल मार्केट है, अच्छा यहाँ पे बेयर मार्केट है, बट अगर आप इतने दिन का मार्केट देखोगे तो इट इज लाइक अ कैंगरू मार्केट, राइट. ऊपर नीचे जंप मार के जा रहा है. सो समटाइम्स पीपल डू नॉट नो हाउ टू हैंडल दिस काइंड ऑफ वोलेटिलिटी. दो यू माइट हैव सीन माय रिजल्ट्स हैव इंप्रूव्ड ड्यूरिंग दिस टाइम. My intraday profits have soared up much more than before because of these kind of good moves, right. So that's about the market, friends. Let me start taking your questions. राइट. विजय भुजबल साहब का सवाल है, MGL, IGL, Zydus, Wellness, Jubilant, Pharmova for long term. बहुत सारे स्टॉक्स हैं. Let's start one by one, right. So MGL को देखते हैं, right. Now MGL हो या IGL हो, fundamentally we have analyzed them in the past. They are good stocks, right. But technically, where have they reached, right. So technically, if you look at, they have shown a very good drop. अगर आप डाउनसाइड में देखेंगे, so MGL is trading somewhere around 798, 800 अगर roughly आप पकड़ लेते हो, तो you can see a very sharp movement we saw from here when the market, the stock had touched 1284, right. 1284 was the last high of it, and from there it made a inverted head and shoulder, and उसके बाद में उस inverted head and shoulder का टारगेट तो करीब 900 के आसपास में कंप्लीट हो गया था, but it didn't stop there. There were continuously a negative news flow. So although अगर आप देखोगे Gas Authorities of India Limited has not fallen so much, which has got the stake in IGL as well as MGL, but MGL as well as IGL has seen a good downside. मेरे ख्याल से ये see this is a very good accumulation point. अगर आप देखेंगे तो अच्छा, एक और चीज हो रही है यहाँ पे, कंसिस्टेंटली डाइवर्जेंसेस दिखा रहा है ये स्टॉक. अगर आप RSI डाइवर्जेंसेस देखेंगे तो पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस दिखा रहा है. मेरे ख्याल से दिस शुड बी पिकिंग अप फ्रॉम 800 लेवल ऑन अपसाइड. योर फर्स्ट टारगेट शुड बी 829, second should be 1070, third target should be 1200, and fourth target should be somewhere around 1300 के आसपास का. As a disclaimer, I'm already invested in MGL as well as IGL for a long period of time, right? And I intend to be invested. अच्छा, meanwhile these companies also give a dividend. फंडामेंटल में कोई चेंज नहीं आया पिछले अगर 1 साल 2 साल की बात करेंगे तो. दूसरा, इनका बिजनेस का जो मॉडल है, दे डिस्ट्रीब्यूट द कुकिंग गैस, राइट. और जो CNG गैस वगैरह भी होती है वो भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो इररिस्पेक्टिव ऑफ लॉकडाउन हो या कोई भी कैलामिटीज हो, घर पे खाना बनाना तो आप बंद नहीं करेंगे. इसके लिए इनकी सेल्स तो ऊपर जानी ही जानी है, एंड सूनर और लेटर दे विल स्टार्ट रिकवरिंग. सिमिलरली जैसे MGL है, वैसे ही IGL आपको 380 के आसपास में अक्यूमुलेशन जोन है इसका. मेरे ख्याल से दिस शुड आल्सो रिवर्स फ्रॉम हियर. वी हैव सीन positive divergences coming even at this point of time. You see from this point to this time the price has gone too low, while as RSI is still at the same level. So it seems that from here you would see upside, right.
ऑफ कोर्स देयर आर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ते हैं तो गैस के जो कंपनीज हैं इन पे थोड़ा उसका एडवर्स इंपैक्ट होता है एंड यू शुड बी एबल टू डील विद दैट, राइट। नाउ रही बात आपकी जाइडेस की लेट्स सी, not in my regular radar, so I'll also need to study along with you, right? So let's pharma का stock है, so already it's a 20 times, it's a trading, it's trading 2 times, right? So not bad that way, 2 times में trade कर रहा है, 30 का P है, 43 का इंडस्ट्री का P है, which seems to be fine, but ROE and ROC बहुत कम है, 10 रुपीज का फेस वैल्यू है, दैट मींस अभी तक स्प्लिटिंग नहीं हुई है इसकी, और डेट टू इक्विटी रेशियो काफी कम है, जनरली फार्मा कंपनीज में होता नहीं, फ्री कैश फ्लो अच्छा है, पीजी रेशियो इज स्लाइटली हाई, लुक्स लाइक इट्स अ ट्रेडिंग क्लोज टू इट्स फेयर वैल्यू, ठीक है, फ्रॉम द फंडामेंटल्स. Now, if you see, the drop has been good. Pharma companies have seen a good drop. Again, अच्छी जगह पे एक support ये ले रहा है. Although it has made a depth cross. Let's look at the shareholders. 65%, 3%, DIs are 24%, and public is 6.99%. So public ने काफी टाइम से इसमें reduce किया है. Maybe patience जवाब दे गया या whatever it is, but DIs have shown a very good trust in this company, right? So let's look at the chart. I hope ये chart हमारे पास में है, नहीं है. We'll have to open a fresh chart. Pharma companies have also seen a good correction recently, right? So fundamentally, we saw that the company was doing well, and let's see a weekly chart since you are looking at a longer time frame, and वैसे भी ये जो इसका चार्ट है काफी लंबा होएगा, जहां पे ये सपोर्ट ले रहा है वो देखेंगे तो, राइट. सो क्लोज टू, it has come very close to your COVID levels, right? Very close to the COVID levels. A good correction, and this seems to be a very good zone for support. Let me draw that clearly, right? So 1400 से 1478 का एक जोन है. Watch out this stock in this zone. अगर ये zone break होता है, then you would be seeing the stock would be visiting 1225, right? 1225 should be a very good price, right? So if you want to accumulate this stock for a long period of time, what you can do is you can start buying it in a staggered manner. Let me save this chart so that I can follow it in future. Right. So looks fine. Only thing is there are two ways to look at it. Whether you want to wait for the entry when there is a golden crossover, that means 50 days का moving average 200 days के moving average के ऊपर जाता है. Some investors use that technique, but from the fundamental value, the price offered at this point of time by the market looks attractive. So 1250 1225 की प्राइस तक आप इसको थोड़ा थोड़ा करके खरीद सकते हैं. So that is what you can do in this stock, right? Now the next company what you have asked, again we'll have to look for Jubilant. Pharmova, इसका fundamentals देखते हैं. I haven't studied this yet, right? Again a pharma company. Pharma company ने अच्छी पिटाई खाई है.
So now ROC ROE is much better than Zydus, which was around 5-6% there, right? यहाँ पे 15 and 16% है, sounds very good. Stock P of 13 is excellent in comparison with the 19.4 of the industry. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छे हैं ये कंपनी के, सेल्स पॉजिटिव में है 5 साल की, तो मोर देन 10% है, राइट? एंड सो इज द प्रॉफिट. फ्रॉम द fair value perspective, if you look at the stock, it might be around 550-600. So that means it is available at a good price, right? Chart perspective से देखेंगे, again like all pharmaceutical companies, it has also made a death cross on account of poor sale. Okay, now if you see from shareholding pattern, so promoters are holding 51%, close to 51%. They are stagnant in their holding. FIs are almost 23%. I'm sure in current quarter they might have sold a little here. DIs have sold this counter, but they were already only 1.75%, right? वहां से 1.06% आए. Public had been holding 17.8%, 25% हो चुकी है public. So that's one matter of concern. But looking at FI's holding sounds to be stable. But why DIs are running off from this counter? You need to look at whether there is a corporate governance issue और कोई और challenge है क्या यहाँ पे. इसका EPS कैसे grow हो रहा है, sales कैसे grow हुई, quarter by quarter, month by year by year, आपको ये check करना है. So you will need to learn how to do the fundamental analysis. Otherwise, prima facie, the stock looks to be okay. From chart perspective अगर हम देखें, Jubilant, let's look at the candlestick chart perspective. Jubilant Pharma, राइट? तो क्या हमारे पास में यहाँ पे कुछ सपोर्ट दिखाई दे रहा है क्या? इसका सपोर्ट बहुत नीचे दिखाई दे रहा है इसका. सो यू माइट सी सम मोर डाउन साइड टू इट. दैट इज नॉट अ वेरी गुड साइन फॉर दिस कंपनी टेक्निकली, राइट? देखो, इसने एक यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बनाया था. दैट वाज अ बेसिक. अगर आप सिंपल मोटा मोटा कैलकुलेशन भी करेंगे, 1000 से लेके करीब करीब 700, 300.700 माइनस 300, 400 का करीब करीब इसका टारगेट है डाउन साइड में. दैट विल बी समवेयर हियर, राइट? ये लेवल. सो दिस इज द सपोर्ट जोन यू विल गेट. और अगर इस बीच में यहाँ पे बाइंग आती है, so you can start buying this stock from the 400 level and you can go all the way to 254. क्योंकि अगर ये लेवल टूटेगा, मार्केट में अगर सेल आउट चालू रहता है, so you might also see this level. You need to watch out your investment if you have chosen to do, right? So अगर ये लेवल पे आएगा, you would find a good support at 250 के लेवल पे. यहाँ से ये लेवल तक आप बाई कर सकते हैं. और अगर ये लेवल टूटता है तो then you should exit, because then it will have a huge downside, right? मतलब 160, 165 के आसपास का लेवल फिर आपको देखने को मिल सकता है. मेरे ख्याल से फार्मा should now reverse its cycle. It's in downtrend. Once that downtrend is gone, you would see the buying emerging in this counter also. फंडामेंटली ठीक ठाक लग रही है. मतलब अगर छोटे टाइम फ्रेम में हम बात करते हैं, अगर हम 15 मिनट 5 मिनट में बात करें, ठीक है, let me save this chart as well. I'll need to study more, but if these stocks seem to be giving some positive vibe, then definitely I would like to study them more. मानसी जी का सवाल है, शेयर योर व्यूज अबाउट GR Infra. GR Infra, GR Infra.
ओके मानसी जी, लेट्स सी. सो इज ट्रेडिंग क्लोज टू 4 times इज बुक वैल्यू. आरओसी ठीक है, आरओई भी ठीक ठाक है. स्टॉक का पी 20 पे ट्रेड कर रहा है, 34 का इंडस्ट्री का पी है, फेयर इनफ. डिविडेंड नहीं देता है. If you see from the fair value perspective, possibly the fair value of this stock is more than this at this point of time. ज्यादा डेटा नहीं, यहाँ पे सिर्फ 5 साल का डेटा है. 5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी रही है, 5 साल की सेल्स ग्रोथ 31% की रही है. दैट सीम्स टू बी गुड. नाउ इफ यू सी द चार्ट, we'll open chart elsewhere. Though the company is reporting profit, it is not paying out the dividend. Delivered a good profit growth of 57%, right? So that is a good aspect of it. So यहाँ पे तो फंडामेंटली ठीक ठाक लग रही है. अभी स्टेक होल्डर्स कौन है इधर? So 2021 में लिस्टिंग हुई तो 3 साल का ही डेटा है. So promoters are holding 86%, FI is holding 2%, DIs are holding 7%, public is holding now only 3%, right? So see, sooner or later the promoters will have to reduce their stake to 75%, right? So almost 11.5% stake अभी इसका मार्केट में आना बचा हुआ है. And what happens when promoters start selling the stock, prices नीचे जाते हैं, right? So that is how because SEBI का rule है, you cannot have more than 75% in the as a promoter in the company. You will have to offload 25% to the public. चाहे उसमें चाहे DI है, FI है, कोई भी आ जाए, ठीक है. So now if you see the chart of it, so इसका चार्ट भी रेडी नहीं है, so we'll have to open up G. इनका कैश साइकिल थोड़ा प्लस माइनस रहता है, तो इसके लिए आपको कैश फ्लो माइनस में दिख रहा है. मोस्टली कंस्ट्रक्शन कंपनीज का, प्रोजेक्ट कंपनीज का कैश फ्लो आपको ऐसे दिखेगा. वीकली है, सो लेट्स गेट इनटू द डेली चार्ट. और डेली चार्ट अगर नहीं खुल रहा है तो 5 आवर्स के चार्ट में जाते हैं. नाउ वी कैन पॉसिबली गो फॉर अ डेली चार्ट. सो इट हैज मेड अ 1M पैटर्न अच्छे से ब्रेक हुआ है. सो डाउन साइड इज मोर देयर. Though fundamentally it was sounding to be good, let's see whether it is going to go beyond this, right? So अगर मैं इस पैटर्न का टारगेट देखता हूं ना, तो ये लेवल भी टूटने वाला. जो ये लेवल मैंने 1627 टू 1650 का लेवल बनाया, ये लेवल भी टूटने वाला दिख रहा है यहाँ पे. सो अगर ये लेवल टूटता है तो देन वेयर द स्टॉक गोज, देन यू वुड सी द स्टॉक गोइंग टुवर्ड्स 1550. So is that the target of this? No, it seems the target is way below even that. So watch out, immediately position ना बनाए. ये जगह पे 1600 से 1650 के बीच में वॉच आउट करें. इफ यू सी एनी काइंड ऑफ बुलिश पैटर्न फॉर्मिंग हियर, वॉल्यूम्स आर राइजिंग, और अभी यहाँ पे देखो डाइवर्जेंसेस भी नहीं दिखाई दे रहे हैं. इट्स अ स्टैंडर्ड पैटर्न फॉलोइंग, राइट? उसके बाद में इसमें फिर पोजीशन बनाई जा सकती है. अभी एज ऑफ नाउ आई वुड नॉट रिकमेंड दिस स्टॉक टू बी इन्वेस्टेड इन. तो लेट इट फॉल टू गुड एक्सटेंट. अच्छा, गुड न्यूज आपके लिए, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन GR इंफ्रा, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा लोअर लेवल पे. Let me save this chart too. So thank you मानसी, अच्छा स्टॉक लेके आए आप. प्रमोद जी गुड इवनिंग, लेट मी टेक योर क्वेश्चन. IGL का प्रमोद जी हमने बात ऑलरेडी कर लिया. IGL का चार्ट भी मैंने आपको यहाँ पे थोड़ी देर पहले ही दिखाया है. लेट मी अगेन शो IGL, ठीक है. एंड वी टॉक्ड अबाउट इट माइट नाउ टेक अ रिवर्सल फ्रॉम हियर, ठीक है. सो वॉच आउट, इट्स कंसोलिडेटिंग. यहाँ पे इसको एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है.
बट थोड़ा इसको इट नीड्स सम पॉजिटिव न्यूज. तो ना FII का फेवरेट स्टॉक है IGL, MGL, since they have been selling for a long period of time, so अच्छी खासी सप्लाई बढ़ी है मार्केट में, इसकी वजह से प्राइस इसकी गिरी है, फंडामेंटली कोई इश्यू नहीं है, सो यू कैन होल्ड ऑन टू इट. ठीक है, लेट्स लुक एट विप्रो. विप्रो के ऊपर कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का चार्ज लगा था फ्यू डेज बैक, वी सॉ दैट, राइट. सो उसका इम्पैक्ट पॉसिबली इसमें आया होगा एंड वी सॉ अ गुड फॉल, राइट. सो हमने एक टारगेट दिया था विप्रो में 525 का, एंड यू कैन सी देयर इज अ स्टिल प्रेशर गोइंग ऑन इन विप्रो. सेल का कैंडिडेट है, लॉन्ग जाने का कैंडिडेट अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है. लॉन्ग जाने का ये कैंडिडेट बनेगा 600 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो, बट 625 में जाके और 600 के आसपास इसको वापस एक रेजिस्टेंस मिलेगा 620 से 625-30 के बीच में. तो वो जगह पे फिर इसको नीचे गिरने का एक चांस होगा, राइट. तो अभी भी इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, बाइंग के वॉल्यूम्स नहीं बढ़ रहे हैं, नॉर वी आर सीइंग एनी डाइवर्जेंसेस हियर, राइट. यहाँ पे कोई डाइवर्जेंसेस नहीं है, ओवरसोल्ड में चल रहा है, ओवरसोल्ड में ही चलता रहेगा ऐसा लग रहा है. सो आई वुड recommend you to look for some other stock in IT than Wipro at this point of time. अगर आपको 525 का लेवल सस्टेन करते हुए दिखता है यहाँ पे, तो आप 464 के आसपास से यहाँ पे खरीदारी चालू कर सकते हैं. तो वैसे भी विप्रो अमंग IT कंपनीज इज नॉट सो चीप. मल्लप्पा जी का सवाल है डीमार्ट. Sir, views in DMart at 4,300, IRCTC 840 for long term 5 to 6 years. Okay, let's see. DMart स्टॉक मार्केट के गुरु की कंपनी है, राइट, एंड इट हैज सीन अ गुड डाउनसाइड. अगर सपोर्ट लेवल के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो काफी इसके सपोर्ट लेवल टूटे हैं, राइट. दिस वाज द सपोर्ट इट हैज टेकन. सो ये एक इसका जोन था जहां पे इसने सपोर्ट लिया, एंड इफ यू सी पास में तो प्राइस ऑफ कोर्स ये लेवल पे थी नहीं, तो ज्यादा पुराना डेटा आप देख नहीं पाओगे. बट इफ यू लुक एट, आई कैन ओनली सी फ्रॉम द टेक्निकल पर्सपेक्टिव, बिकॉज फंडामेंटली अगर मैं देखना चालू करूंगा तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव, राइट. सो अगर मैं टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बात करूं तो यू वुड सी दैट दिस स्टॉक हैज टेकन अ सपोर्ट एट समवेयर अराउंड what percent Fibonacci? 61% Fibonacci, right? So that's a good support level, right? Now, growth story of DMart is amazing, right? From this level, if it has taken a support, it might move upside. So if it goes and sustains above 4,300, so watch out few more days. If it sustains above than that, you would see it would move towards 4,800. That should be your first target. 5,000 should be second target, and 5,600 to 900 आपका थर्ड टारगेट होना चाहिए यहाँ पे. बट एज ऑफ नाउ सेलिंग प्रेशर बना हुआ है यहाँ पे, और अभी भी कंसोलिडेशन के फेज में है, दो इट हैज गिवन वेरी गुड बुलिश साइंस वंस हियर एंड वंस हियर एज वेल, राइट. मार्केट अगर ऊपर साइड में आती है तो इट विल मूव अप. काफी लोग रिटेलर्स का काफी इन्वेस्टमेंट है इस पे. लेट्स सी, let's save this, rename this chart first. You can also follow a similar strategy of storing the chart so that you know what you studied last time, right? IRCTC. Again, you have chosen an expensive stock. So सिर्फ टेक्निकल बात कर सकते हैं, फंडामेंटल बात करके कोई मीनिंग नहीं बनेगा, राइट. एंड फॉर द टाइम व्हेनेवर वी डिस्कस दिस स्टॉक, आई हैड सेड दैट ये स्टॉक में अपसाइड काफी लिमिटेड है, अंडर प्रेशर है ये स्टॉक, एंड इसका जो ये जोन है, ये सपोर्ट जोन है इसका, राइट. एंड नाउ आफ्टर
traveling for almost 2 months, 200 days moving average has become a support level for it. Downside, अगर ये गिरता है 656 के आसपास में, that could be possibly a good price to enter. But 50 period moving average, which is at 830, is giving it a very good support. So अगर आप 5 to 6 years की बात कर रहे हो, मेरे ख्याल से a transportation should change a little different shape. The monopoly of IRCTC may reduce, okay, and already at this price after splitting also there is hardly much of the liquidity. So ये अक्टूबर में 5:1 में split हुआ था because liquidity नहीं बन रही थी, although the stock has run up very fast, right? So despite the split, the share being made available at a very economical or सस्ते price पे, yet it is not showing the अपवर्ड साइड. सो कंसोलिडेशन के फेज में है, एक्सपेंसिव है, इसके लिए 5 to 7 years में यहां से और ऊपर जाएगा बोलना डिफिकल्ट है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन होने दो या ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी होने दो, वी आर सीइंग लॉट ऑफ चेंजेस हैपनिंग इन द इंडस्ट्री, एंड हाउ इट विल शेप आफ्टर 5 years 7 years फॉर दिस कंपनी, दैट वुड बी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट. बट यू कैन बाय इन अ स्मॉल क्वांटिटी एंड चेज द मोमेंटम. ये मोमेंटम का ही है अभी स्टॉक, राइट? क्योंकि फंडामेंटली फेयर वैल्यू से नीचे लेने का स्टॉक है नहीं, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू गेट दैट प्राइस, राइट? सो फिलोसफी आपकी कौन सी है, ग्रोथ या मोमेंटम या वैल्यू जनरेशन की, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि हाउ यू वांट टू प्ले आउट योर स्टोरी इन दिस स्टॉक. ऑलराइट, कमलेश जी का सवाल है, your view on Vedanta and ASM Technologies and Electra and Tata Elxsi and Adani and okay, good. So I'll take your questions. Let me see. Vedanta. Now Vedanta के बारे में I'm sure you have my view. Vedanta belongs to Anil Agrawal ji, right? Anil Agrawal ji is a very great businessman, but at the same time a very shrewd businessman. Corporate governance के issues हैं और बहुत सारे challenges हमने time to time देखे हैं. He's a ruthless businessman, very successful businessman, right? So कभी ये delisting होता है, कभी buyback होता है, कभी threats आते हैं, बहुत सारे यहाँ पे issues हैं. LIC is one of the largest stockholder of Vedanta. So mostly we can say it's a news driven, right? Either the news is about the dividend, हिंदुस्तान जिंक इनकी कंपनी है, और चाहे इनका कॉपर का प्लांट होए, सो वहां का जो यहाँ पे डिविडेंड आता है, so there is something or other. Mr. Agrawal wants to take the whole control. He wants to delist this company, and that is driving the volatility. If you look at this period or the period before. So if I talk about this, I can say roughly ये एक speculative move देती है ये कंपनी. अगर ये speculative move देती है ये कंपनी आपको, let me get into the daily chart है, 5 मिनट का चार्ट में. So स्पेक्युलेटिव मूव देने वाली कंपनी से, या जो बहुत ज्यादा फोरग्राउंड में रहती है, न्यूज में बहुत ज्यादा रहती है, एज एन इन्वेस्टर यू शुड स्टे अवे फ्रॉम इट, क्योंकि वहां पे स्टेबिलिटी नहीं होगी आपको. अगेन आई एम नॉट एबल टू सी द चार्ट इन वीकली. हाँ, नाउ इट इज ओके, ठीक है. सो अगर डीलिस्टिंग होगी तो दे नीड LIC टू सेल देयर स्टॉक्स, एंड LIC हैज ऑलरेडी गिवन अ 400 के आसपास का टारगेट दिया हुआ है. तो मे बी द स्टॉक विल गो अप टू दैट, एंड उसके बाद में फिर अपर सर्किट लोअर सर्किट क्या लगता है, ट्रस्ट मी, न्यूज ड्रिवन स्टॉक में बोलना थोड़ा मुश्किल होता है, राइट? सो माय एडवाइस एज अ टू रिटेलर इज टू स्टे अवे, फाइंड आउट फॉर इन्वेस्टमेंट अ बेटर कंपनी which is having a no corporate governance issue, and then focus on to that, right? रही बात ASM टेक्नोलॉजीज की, ASM टेक्नोलॉजीज का फंडामेंटल्स मुझे बाय हार्ट नहीं है, सो आई विल जस्ट हैव अ लुक एट इट. सो इट्स ट्रेडिंग मोर देन 10 times, 51 के पी पे, 32 के पी पे स्टॉक है. ऑलरेडी ये एक्सपेंसिव हो चुका है वो पर्सपेक्टिव से, राइट?
बाकी फ्री कैश फ्लो 5.85 करोड़ का स्मॉल कैप है, राइट। सो अगर आप पीजी के पर्सपेक्टिव से देखोगे, एक्सपेंसिव स्टॉक है। अगर मैं इसकी फेयर वैल्यू भी निकालने जाऊंगा तो भी वो इतनी ज्यादा नहीं, फेयर वैल्यू से काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है। बट most of the IT companies are trading like that, and most of the IT company got corrected also, and that we have witnessed in last few months. Except TCS, most of the IT companies have seen the good downside. Now, अगर मैं बाकी के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो स्मॉल कैप है, जनरली आप डीआईज को नहीं एफआईज को नहीं देखोगे, यहाँ डीआई जीरो है, इट्स बिटवीन प्रोमोटर्स एंड पब्लिक। अब वो एक गाना है ना, ये पब्लिक है ये सब जानती है। आई डोंट नो वेदर यू नो दैट सॉन्ग और नॉट, बट ट्रस्ट मी, स्टॉक मार्केट में ठीक उल्टा है। यहाँ पे ये पब्लिक है ये कुछ नहीं जानती है, राइट। और क्योंकि कुछ नहीं जानती इसके लिए बहुत बल्क में खरीदती है माल और धोखा खाती है और लॉसेस बुक करती है। सो आई वांट यू टू टेक केयर ऑफ दैट एस्पेक्ट हियर। फाइंड आउट कंपनीज वेयर यू नो promoters are strong, companies fundamentally strong, and participation of DIs and FIs also is good because that's important to hold the price. रिटेलर के पास में प्राइस को होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं है। ग्रीड में दे कैन पुल द प्राइस अप, बट वहां होल्ड होना चाहिए और उसके ऊपर ग्रोथ होनी चाहिए। तो ये कंपनी वो ट्रेड्स नहीं दिखा रही है। ओलेक्ट्रा के कुछ ऑर्डर्स, इलेक्ट्रिक बसेस वगैरह वो बना रहे थे। दे आर इनटू डाइवर्सिफाइड फील्ड्स, राइट। They were into composite polymer insulators and electrical buses, right? Now, look at fundamentals. 222 rupees का इसका P है. What does that mean? इस कंपनी से ₹1 कमाने के लिए आपको 222 रुपीस लगाने पड़ेंगे। इसको डाइजेस्ट करो जो मैंने बोला। ₹1 कमाने के लिए 222 रुपए आपको लगाने पड़ेंगे। इज इट अ गुड प्राइस? वन एस्पेक्ट। सेकेंड एस्पेक्ट, आपका पैसा डबल करने के लिए 222 years लगेंगे। इफ यू आर विलिंग टू डू दैट, गो अहेड विद दिस, राइट। फ्री कैश फ्लो माइनस में है, आरओसी आरओई नील है ऑलमोस्ट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 4.8% का है। सो हु इज स्पेक्युलेटिंग दिस कंपनी टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ वेल्थ कि वो ₹1 के पीछे 222 रुपए लगाने के लिए रेडी है। फेयर वैल्यू पर्सपेक्टिव से देखूंगा मैं आपको तो इसकी फेयर वैल्यू 100 रुपीज के ऊपर की नहीं। इसका मतलब है कि 7 गुना महंगा बिक रहा है ये स्टॉक्स अभी। आई डोंट नो, इतना समझाने के बाद में अगर आपको बात समझ में आ गई तो अच्छी बात है, अदरवाइज एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लो। एफआईज के पास में 9 टका है, डीआईज गुल, इट्स अगेन बिटवीन प्रोमोटर्स एंड पब्लिक है, और ये पब्लिक है कुछ नहीं जानती है, राइट। सो दैट्स अबाउट योर ओलेक्ट्रा। What else is your Tata Elxsi, right? Let me see, Tata Elxsi. Tata Elxsi, artificial intelligence as well as in your automobile sector is very active. Tata Group company, of course. And now if you see from the perspective of fundamentals, you will find it expensive. So are all IT companies. But at what book price they are trading, look at it, what is their ROE and ROC, excellent ROE, ROC है, 3 times it's asking the premium, right? 100 रुपए की चीज को 300 रुपए में लो बोल रही है ये। If you are interested in, go ahead with that. फेयर वैल्यू पर्सपेक्टिव से फेयर वैल्यू अच्छी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई इश्यू नहीं है। इफ यू कैन होल्ड इट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, then only you should enter, because you know it might show you a good jerk in between, right? So जब भी डाउन साइड होगी, अच्छी खासी डाउन साइड होगी, करेक्शंस होंगे तो अच्छे खासे करेक्शंस होंगे। आईटी सेक्टर्स में अच्छे खासे करेक्शन हुए, बट इसमें करेक्शंस बहुत खास नहीं हुए। You might have seen that this correction phase was very steep in Infosys or HCL or other companies.
यहाँ पे वो जो है ऑलरेडी ये पीक पे चल रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, व्हेन यू आर बाइंग द स्टॉक, आर यू बाइंग एट वैल्यू व्हिच इज लेस देन इट्स अ फेयर वैल्यू, और एटलीस्ट फेयर वैल्यू से चलो 25% प्रीमियम दे दिया आपको, कंपनी बहुत अच्छी लगती है तो, राइट। सो यहाँ पे भी promoters 44% है, public 38%, FIs and DIs, FIs 12% and DIs almost 5.5%, right? So कुल मिला के अगर देखते हैं, कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, स्टेबिलिटी है, बट प्राइस बहुत एक्सपेंसिव है। मेरा पर्सनल मानना है कि एक्सपेंसिव कंपनी खरीदने से अच्छा है कि आप ऐसी कंपनी ढूंढें जो अंडर वैल्यूड हो। अंडर वैल्यूड कंपनी में ग्रोथ का, आपके वेल्थ के ग्रोथ का चांस अच्छा होगा। अदरवाइज क्या होता है, ग्रोथ स्लो होती है। मे बी राइट नाउ आईटी कंपनीज अच्छा कर रही हैं, ये कंपनी भी अच्छा करेगी, बट यू वुड नॉट नो व्हेन टू एग्जिट, राइट? सो दैट विल गिव यू अ डिस्कंफर्ट सम टाइम। आपको एलएक्सी का चार्ट है क्या? लेट मी सी। आपको एंट्री पॉइंट चाहिए ना, तो एंट्री पॉइंट के लिए मुझे ये चार्ट देखना पड़ेगा। Give me a minute, let the charts open. ओके, सो अगर आपको एंट्री पॉइंट चाहिए है, मेरे ख्याल से योर बेस्ट एंट्री पॉइंट विल बी 5500 पे, एंड इफ यू सी द डाउन साइड देन अगेन 5000 टू 5500 पे आपको शायद एंट्री मिल जाए, क्योंकि और उसके नीचे गिरेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है, अनलेस अंटिल देयर इज अ बिग क्रैश इन द मार्केट। ठीक है, ऑल राइट। सो जीके का सवाल है, हेमी प्रॉपर्टीज। हेमी हमने बहुत, हेमी स्पेयर बहुत टाइम पहले हमने ये स्टॉक एनालाइज किया था। टाइम क्या मतलब, ऑलमोस्ट 1 साल पहले, राइट? Then we had seen the fundamentals were not promising and I had suggested no buy on this. Let's see क्या ऐसा चेंज हुआ है ये कंपनी में पिछले 1 साल में, राइट? ये देखना भी जरूरी है, राइट? सो बुक वैल्यू 13 रुपए की है, 10 गुना महंगी चल रही है ये स्टॉक, और ये स्टॉक ऐसा कुछ ओवरऑल या ऐसा कोई बड़ा नाम नहीं है, राइट? आरओसी माइनस में, आरओई माइनस में है इसका। डेटा लिटरली बोलूं तो यहां कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो कम है, सो कैश रिच कंपनी है। फ्री कैश फ्लो अच्छा है, दैट्स गुड एस्पेक्ट ऑफ इट। 202 का ये हाई बना चुकी है ये कंपनी, राइट? इसके फेवर में कुछ नहीं है, जो भी है सब कॉन्सिक्वेंसेज हैं। 10 टाइम्स ट्रेड कर रही, महंगी है ऑलरेडी। नाउ लेट्स लुक एट, जैसे ही ये पता चलता है ना, तो पहले पहले हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना चालू करते हैं, राइट? प्रोमोटर्स 51%, एफआईज 18% थे, 4% हो गए, डीआईज 1.5% थे, 0.7% हो गए। पब्लिक निकली है यहां से, राइट? बट पिछले 3 क्वार्टर में पब्लिक बड़ी है, यहाँ पे 54% थी, दिसंबर 2020 में निकली है। मार्च 21 से पब्लिक ने थोड़ा सा यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाना चालू किया, बट बड़े प्लेयर यहाँ पे है नहीं। तो क्या होएगा, कभी भी ड्रॉप आएगा ना, तो वो बड़ा ड्रॉप होएगा, क्योंकि पब्लिक वो ड्रॉप को प्राइस में संभाल नहीं सकती है, राइट? प्लेज नहीं है, और प्रोमोटर्स ने कोई चेंज नहीं किया है। अगर मैं कंपनी के फाइनेंशियल की बात करूं, in case if any adverse impact comes, company is not in the position even to sustain that kind of jolt, right? That's on this side. Let's see, अगर चार्ट पूरा खुला हो तो हम चार्ट में देखें। Let me reset this chart and see थोड़ा। Now this is a range bound stock from a long period of time with a selling pressure. अगर आप देखोगे
ये लो, ये लो, ये लो, 3 बार यहाँ पे आ गया और अभी भी सेलिंग प्रेशर बना हुआ है यहाँ पे। अगर ये लेवल टूटता है ना 120 से 130 का, अगर ये लेवल टूटा तो यू वुड सी दिस स्टॉक फ्लैट फॉलिंग। ये जिस हिसाब से अपर सर्किट मारे हैं, इसने जंप मारी है ना, ये ऑपरेटर का ड्रिवन स्टॉक है। फिर आपको ये दिखाई देगा 95 रुपीज पे, फिर इसके बाद में दिखाई देगा 74। बाई करने का तो डेफिनेटली एडवाइस नहीं दूंगा आपको मैं, बाकी आपके ऊपर है। दूसरा है आपका गल्फ ऑयल ल्यूब। लेट्स सी गल्फ ऑयल ल्यूब का, लेट मी सेव दिस चार्ट। क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर अगर आप देखोगे अच्छे राइज पे है, डिस्पाइट दैट हेमिस्फीयर डाउन है। क्यों ऐसा है? अगर ये एट पार कंपनी है तो इट शुड बी फॉलोइंग निफ्टी आईटी, निफ्टी रियलिटी का चार्ट ये फॉलो करना चाहिए। गल्फ ऑयल ऑलमोस्ट 2.5-3 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है, ठीक ठाक है। आरओसी आरओई एक्सेलेंट है, मोर देन 20%, दैट्स गुड। डेट नहीं के बराबर है, 0.33% है। डिविडेंड 3% देती है, राइट। एंड दिस इज अ प्राइवेट प्लेयर। ओपीएम ठीक ठाक है, 16.8% का। इंडस्ट्री पी से तो 1/3 पे ऑलमोस्ट ट्रेड कर रही है। फेयर वैल्यू परस्पेक्टिव, अच्छा फ्री कैश फ्लो है यहाँ पे 464 करोड़ का, ऑल्दो स्मॉल कैप है। अगर मैं फेयर वैल्यू परस्पेक्टिव से देखता हूं तो अराउंड 600 रुपए के आसपास की इसकी फेयर वैल्यू होनी चाहिए। सो यू कैन से अराउंड 100 रुपीज का अपसाइड फंडामेंटली मुझे यहाँ पे दिखाई देता है, राइट। सो नाउ अगर मैं चार्ट के परस्पेक्टिव से देखूं, चार्ट डाउन साइड में, एंड जो भी अभी ऑयल मार्केटिंग की कंपनी हो, ऑयल सेक्टर की कंपनीज हो, वो आप देखोगे थोड़ा डाउन साइड में दिखाई दे रही हैं, राइट। सो दैट इज ऑन दिस साइड ऑफ दिस। यू माइट सी अ गुड प्लेयर्स बीइंग हियर। थोड़ा स्टेबल पैटर्न है, 72% promoter, 6%, 5% एंड 16% पब्लिक। सो वी कैन से दैट रफली एफआईज और डीआईज ने अपनी पोजीशंस मेंटेन करके रखी हैं, या मोर और लेस 1% 2% निकाला। दैट टाइम टू टाइम दे वुड कीप ऑन डूइंग फॉर मेकिंग देयर बैलेंस शीट्स एंड पीएनएल रोबस्ट, राइट। तो वो टू दैट एक्सटेंट इट इज फाइन। सो नाउ फ्रॉम द फंडामेंटल पर्सपेक्टिव इट सीम्स टू बी गुड। इसका मतलब है वी शुड एक्सप्लोर इट टू नेक्स्ट लेवल of the chart, Gulf oil. तो कमजोरी आपको चार्ट में दिख रही थी, लाइन चार्ट में भी, एंड आई एम श्योर इवन यहां पे भी आपको वो कमजोरी दिखेगी। You could see that weakness in the chart, right? And let the entire chart open up. तो अच्छे सपोर्ट से जंप लिया है कि इसने, और वॉल्यूम के साथ में जंप लिया है क्या? So this was a good support जहां से इसने टर्न लिया है, right? And did it go with some indication? Yes, there were positive divergences when the trade were here, right? ये प्राइस से ये प्राइस में जब प्राइस गिर रही थी तो somebody was accumulating this stock, right? और ये वाला मूव उसके बाद में आया है. So this move seems to be sustainable. Only challenge this company would face will be the price of oil. If the price of oil keeps on going, this company will regularly see the selling pressure और buyers नहीं खड़े होंगे. If that happens so, तो थोड़ा अप मूव आपको फटाफट नहीं दिखाई देगा. So if you can live with that, if you know that कि oil $100 के ऊपर नहीं जाएगा, per barrel, तो ठीक है, और you are okay with the slow growth, क्योंकि फंडामेंटली खराबी नहीं है, लेकिन यहां से ऊपर आने के लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए वो स्ट्रेंथ नहीं आ रही है बिकॉज ऑफ द ऑयल प्राइसेस. सो वो आप देख लो, अदरवाइज यू कैन इन्वेस्ट इन दिस. Dexter, your question is ICICI Bank. Very good. So ICICI Bank is a good bank. Now, question is whether the buying price is still a good price or it's expensive at this point of time, right? So we would see major 5-6 banks and compare their prices.
ठीक है. सो प्राइस वाइज ये डाउन ट्रेंड में आ गया अभी. फ्रॉम दिस प्राइस इट इज मेकिंग लोअर लोज. इन बिटवीन थोड़ा स्ट्रेंथ आई थी. नाउ अभी एक फ्रॉड निकल के आया 22,000 करोड़ का, राइट. और उस फ्रॉड में सबसे बड़ा एक्सपोजर है आईसीआईसीआई बैंक को. 7,500 करोड़ का एक्सपोजर है. सो मंडे यू वुड सी दैट विल इम्पैक्ट दिस स्टॉक. सो इवन इफ इट किल्स 2% ऑफ इट, 790 का 2% ले लो आप, यू वुड सी द डाउन साइड ऑन मंडे. ठीक है. Should you buy at that price? I had recommended this stock way back at 450 rupees price, and in between also whenever Bank Nifty was down couple of times in my stock market ki baat MJ ke sath last 4-5 months have been covering almost all the private banks because the valuations were good at that time. Now agar main banking ka valuation dekhta hu na, let's look at the banking valuations. ठीक है. Now this is just 3 times right now, which is fair enough. 3 times से थोड़ा ज्यादा है, which is fair enough. Operating profit margin minus में है. That's not a good sign. But the best part, despite being a bank, free cash flow is in positive. Generally बैंक का free cash flow minus में जाता है क्योंकि लोन दे रही होती है बैंक, right? And that's a very basic nature of the bank's business. Z score is not good here. अच्छा, 5 साल का प्रॉफिट 12% का, विच इज गुड. 10 साल का भी सेल्स एज वेल एज प्रॉफिट 10% के ऊपर है. दैट्स गुड पार्ट ऑफ इट. प्रोमोटर्स जनरली वुड बी वेरी लेस इन द बैंक्स, 20% के नीचे ही रहते हैं, या मोस्टली प्रोमोटर्स विल बी एफआई. सो इन दिस केस इट वुड बी द केस एफआईज विल बी बिगर प्रोमोटर्स, डीआईज विल बी बिगर प्रोमोटर्स, राइट. 45%, 43%. नाउ दिसंबर क्वार्टर में एफआईज हैव सोल्ड क्लोज टू 2%, which is very natural, right? FIs had to book the profits, so ICICI counter ऐसा है कि जहां पे प्रॉफिट उनको बुक करना था. नॉट ओनली इन दैट क्वार्टर, प्रीवियस क्वार्टर ऑल्सो. जून से सितंबर के क्वार्टर में भी दे हैव सोल्ड द स्टॉक. अगेन प्रॉफिट बुकिंग वाज गोइंग ऑन. हु बॉट दैट टाइम? DIs. अगेन व्हेन दे सोल्ड हियर, DIs बॉट, एंड थोड़ा पब्लिक ने खरीदा. नाउ यू कैन सी इन दिस काउंटर पब्लिक डज नॉट बाय मच. The sale is happening more between DIs and FIs. माल वहीं का वहीं absorb हो जाता है. So that's a good sign, right? Now, just a quick comparison करेंगे before we close this session. Let's say HDFC Bank, Kotak Bank, ICICI Bank, Axis Bank, IndusInd Bank, IDBI Bank, Bandhan Bank. Government bank नहीं है, ये सब private banks हैं. Most of the times as a layman, जो simplistic yardstick है बैंक्स को देखने की, that is called current market price to book value. So that is here, right? HDFC 4 times पे ट्रेड कर रहा है, ICICI बैंक 3.5 times पे ट्रेड कर रहा है, कोटक 4.2% पे, मतलब कोटक सबसे महंगा बिक रहा है. एक्सिस बैंक 2.38, इंडसइंड अगेन हिंदुजा बैंक है, एंड दे हैव गॉट कोर्ट ऑर्डर टू इंक्रीज देयर, आई थिंक कोर्ट और RBI, somebody has allowed them to increase their shares, so they might have bought the stock, but it's at a very good price, good current book value ratio, right? IDBI I don't recommend. Bandhan Bank I'm not an expert of that, I'm not invested even in that, right? तो ये stocks के perspective से आप देखोगे तो ICICI in comparison with HDFC and Kotak definitely, you know, 0.5 to 0.75 के हिसाब से कम एक्सपेंसिव है. इट इज चीपर. सो दैट्स वन एस्पेक्ट ऑफ इट. इफ यू सी interest coverage ratio, you would see the Kotak Bank is having better interest rate ratio. ICICI is not having that good interest coverage ratio. Debt to equity, again Kotak and HDFC are highest, right? In fact, Axis Bank is now also 8.3. So from that perspective, Kotak Bank is better off. Pledge, IndusInd Bank में pledge है, so I don't recommend any stock where there is the promoter has given a pledge, right? Profit growth perspective यहाँ पे देख लें आप. So ICICI's growth 51%. That's the, you know, that's why where the price has jumped, right? A lot of
participation of FIs and DIs in this stock. अगर ROC ROE more or less they are more or less similar हैं सब, right? 13.5 वो हिसाब से. So conclusion क्या है? Conclusion ये है, if you are able to buy this stock at 700 650 के आसपास में, go ahead with buy. The good support is 763, right? ये प्राइस जो है, तो यहाँ पे आके अगर प्राइस मंडे को गिरती भी है, this would be the price, and from here it will get back. Your first target should be 867. ओके कुणाल जी, आपका लास्ट सवाल लेते हैं. I was into intraday trading, recently started investing in direct equity, since then market is tumbling. Weekly covered calls. Good. So Kunal ji, before you become intraday trader, you should have been an investor. That's how the journey is most rewarding. पहला आपको इन्वेस्टर होना चाहिए है. इन्वेस्टमेंट से आपको पैसा बनाना चाहिए अच्छा खासा. आपके पास में कैपिटल होनी चाहिए बड़ी. उसके बाद में उस कैपिटल के ऊपर आप लेवरेज ले सकते हो, उनको प्लेज कर सकते हो, उनके ऊपर ईएमएफ ले सकते हो. आपके ब्रोकर्स आपको डिफरेंट काइंड ऑफ फैसिलिटीज देते हैं, राइट? ट्रेडर बनके इन्वेस्टर बनना डिफिकल्ट है, वनस्पत की इन्वेस्टर बनके ट्रेडर बनना. सो दैट्स one answer to your question. Now, since you have started investing, the market is tumbling. So to avoid that, you should identify good stocks and start sipping in that. So that will take care of the volatility. And आपके टोटल साल का जो ओवरऑल रिटर्न आएगा, एवरेज प्राइस होगी बाइंग की, वो अच्छी होगी. सिंस यू हैव चोजन द फंडामेंटली गुड स्टॉक्स, irrespective of whether stock falls or rises, have average price to do that. That's what I've been telling all of my students, and I have shared that many times. I have shown my P&L and my account, how I am buying regularly, in small quantities, as and when the stocks fall, right? Provided once you have already checked that the stock is fundamentally good. ये पहली primary requirement होनी चाहिए. You would see when I am analyzing the stocks here for my community, what I am doing. If the stock is new, first I am going into fundamentals, right? ये बराबर है या नहीं है. Then I am going into technical aspect of it. Again क्या हो रहा है? पहले investing देख रहा हूँ, फिर technical देख रहा हूँ, right? So that might cover your second question. Third, आपने बोला investing in Nifty Bs with weekly covered call. So they are completely different ball games. Investing in Nifty Bs, again you can start a SIP. रोज का एक खरीदो, रोज का दो खरीदो. That's what I do. I've been doing it for years. Nifty Bs, Bank Bs, Gold Bs, बिंदास खरीदते रहें. कुछ भी होएगा, मार्केट किधर भी जाएगा, किसी टाइप का अनफोर्सीन इवेंट आएगी. कोरोना जैसे टाइम पे when Nifty Bs was 84 rupees, I had advised people to buy. And I have also advised when Nifty Bs were trading at 175 rupees. समझ लो 175 से अगर आपने 84 तक लिया होता था, तो आपकी एवरेज प्राइस आ गई होती थी 120 रुपए के आसपास में. Now Nifty Bs is trading at 190. That means 70 rupees over 120. That's a good ROI, right? So that's one subject. Now for trading, if you want to use a covered call, that's a different subject altogether. Now you can do covered call either with futures, that you should not do as a novice trader. If you want to do that with equity, that means you should have at least one lot of stocks with you. That means one lot का मतलब क्या है? 6-7 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट एक स्टॉक में होना चाहिए. और do that for the stock which is not volatile stock, right? जो बहुत तेज से ना भागता हो. So what you can choose is your PSUs, PSEs. FNO में है,
जब भी उनकी आप पुट और कॉल की वैल्यू देखेंगे अच्छी खासी होती है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ्स अगर आप उनका एटीआर निकालोगे और वो एटीआर के हिसाब से देखोगे बहुत बड़ा मूवमेंट आता नहीं. दैट मीन्स योर टाइम डिके एंड योर प्रीमियम विल रिमेन ओटीएम, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है. सो दैट्स हाउ यू कैन सेल द कवर्ड कॉल्स, राइट. वीकली कवर्ड कॉल अगर आप निफ्टी में सोच रहे हो, दैट विल बी रिस्की मैटर अनलेस अंटिल यू आर एक्सपर्ट ऑफ ऑप्शंस ट्रेडिंग सेलिंग. बट स्टॉक में आप ऑप्शन की कवर्ड कॉल डेफिनेटली कर सकते हैं, एंड दैट्स वन वे टू मेक श्योर मनी, जिसको हम बोलते हैं ना कि एक सिक्योर्ड इनकम जिसे बोलते हैं, तो आप वो सिक्योर्ड इनकम कर सकते हैं. ठीक है. सो okay, if you have if I buy, no, that would not be a good idea to have 7 to 8 lakh rupees nifty bees, because अगर कल मार्केट में कुछ भी टाइप का क्रैश आया, your nifty bees will go so much in minus that आप टेंशन में आ जाओगे and you will take a decision to sell them. So that's not a very good idea unless until you have few crore rupees of capital. अगर आप 50 लाख और 1 करोड़ की कैपिटल वाले हो और उसमें आप सोच रहे हो कि मैं 8 लाख रुपए की निफ्टी बीज ले लूं, तो दैट वुड नॉट बी अ गुड आइडिया इन माय व्यू. योर पोर्टफोलियो शुड बी वेल डाइवर्सिफाइड, एक ही आइटम में नहीं होना चाहिए. ऑलराइट गाइस, दिस इज 8 minutes past 10 and time to say goodbye. I wish I could spend more time with you. I could answer your questions more, but again, you have two options where I can be of your support. One, you can post your questions in STI group. That's exclusive group on Facebook for our community of traders, investors and students, right? आप यहाँ पे अपने सवाल पूछ सकते हैं. Of course, आपको लाइव सेशन नहीं मिलेंगे वहां पे, बट आपका क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली आपको विद इन 1 week मिल जाएगा. यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे आंसर्स होंगे, बहुत सारे एनालिसिस होंगे विद चार्ट, तो आपके सवाल का भी डेफिनेटली जवाब यहाँ पे मिल जाएगा आपको, राइट. So that's one option. Second option, what you can do is possibly you can go to our YouTube channel, and in YouTube channel also in community tab or below this video, you can definitely write your question, and next week I will pick up that question first, right? Many a times in 1 hour we cannot answer each and every question of yours. That's the only way your question can be taken on priority. तो यहाँ पे community tab भी है, आप वहां भी सवाल पूछ सकते हो, या किसी भी वीडियो में जब भी आप सवाल पूछते हो तो अपने हमारे पास में एक पॉपअप आ जाता है. We always reply to your questions within a week's period. That's another way we serve this community of investors and traders, right? So do spread good word about Praj Academy of Capital Market. The only purpose we have is to serve our community such that they take right decision with our support or by them learning it very well. All right. Good night. Take care. Have a happy weekend.